Hello friends, welcome back to my channel. Arunachal Pradesh Public Service Commission has released a notification on 12th June. ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. 69 पोस्ट है यहाँ पे. आप देख सकते हो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए एलोपैथी में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है. यहाँ पे स्केल है पे स्केल 15,600 to 39,100 है प्लस ग्रेड पे 5,400 पर मंथ प्लस NPA एस एडमिसिबल अंडर रूल. यहाँ पे कैसे अप्लाई करने का अब देख सकते हो. यहाँ पे अब APST कैंडिडेट्स है. APST कैंडिडेट्स है 14 पोस्ट और अनरिजर्व के लिए एंड 3 पोस्ट है from 55 posts are reserved for persons with disabilities. कैसे अप्लाई करने का? हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का appsc.go.in में. और अब देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करने का टाइम पे क्या क्या करने का. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट. डिटेल्स इन सेक्शंस फॉर OTPR. वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं. वन टाइम process registration. Online applications are available on the above mentioned website. The applications are advised to submit only single application. मतलब मल्टीपल नहीं करने का, एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करने का. अनअवेलेबल सिचुएशन इफ ड्यू टू एनी आपको लगता है कि पहले एप्लीकेशन जो किया वो सही से नहीं हुआ, गलत हुआ, तो अवॉइडेबल सिचुएशन अगर अवॉइड नहीं कर सकता है तो अप्लाई कर सकता है. इधर है इफ शी और ही सबमिट्स अनदर और मल्टीपल एप्लीकेशंस देन must ensure that application with a higher registration IDs is complete in all respect like applicants details. photograph, signature, photo ID, fee ये सब रहना चाहिए. The applications who are submitting multiple applications should note that only the application with higher RID shall be entertained by the commission and fee paid against one RID shall not be adjusted against any other RID. Those who have already registered in OTR need not register again. इससे पहले आप APPSC में रजिस्टर किया होगा तो फिर से रजिस्टर नहीं करने का. एक ही पर्पस से. एलिजिबिलिटी है द ए रिकग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन included in the first or second schedule or part 2. The candidates who may not have completed compulsory rotating internship are also eligible to apply for the reader examination. Up a Indian Medical Council Act 1956 holders of education qualification included in the part 2 third schedule should also fulfill the conditions stipulated in subsection of section 13 of the Indian Medical Council Act 1956. एज लिमिट है 30 ईयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए. जुलाई 17 तक. रिलैक्सेबल फॉर SC/ST कैंडिडेट्स 5 ईयर्स है. Candidates who is on internship after qualifying the requisite examination shall also be eligible. आप ये देख सकते हो proof of having passed the qualifying examination in original on or before the date of interview to be fixed by the commission, failing which they will not be allowed to appear in the interview or viva voce test. तो यहाँ पे the mark sheet grade report in original. The decision of commission as to eligibility or otherwise of a candidate of admission to the examination shall be final and binding. No candidate shall be admitted to the written examination unless holds certificate of admission from the commission for that purpose. Method of selection है eligibility candidates have to appear written examination अप्लाई करने का. बाद में एग्ज़ाम पास हो गया तो वाइवा वोस रहेगा, वो भी अप्लाई का वो भी अटेंड करना पड़ेगा.
पेपर 1 में 200 मार्क्स है. ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल मेडिसिन इंक्लूडिंग कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, dermatology and psychiatry. Surgery including ENT, ophthalmology, traumatology and orthopedics. पेपर 2 में 200 मार्क्स है. पीडियाट्रिक्स, गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, प्रिवेंटिव, सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन है. वाइवा उसके लिए 50 मार्क्स है. पर्सनालिटी टेस्ट एंड जनरल एप्टीट्यूड, जनरल मेडिकल सब्जेक्ट फॉर एलोपैथी है. द कैंडिडेट्स who secure a minimum 33% of more marks in each written examination papers, 45 marks, 45% of marks out of aggregate total marks in the written examination paper shall be eligible for Viva's test. On the other hand, it will further mean the selection for Viva's test shall be based on the aggregate total marks secured in the written examination papers and subject to ratio 1:3. The candidate securing less than 33% of marks in any of the written examination paper shall not be eligible for appearing in the Viva's test. Scanned copies of following documents and information are to be uploaded. Signature and of the candidates on white paper with a black ink pen. 2260 kb रहना चाहिए उस. Latest recent photograph है. The candidates who have been declared qualified in the written examination will have to submit xerox copies of the following documents. Recent passport photograph है. Passport size photograph है. Self-attested xerox copies of certificates and mark sheets issued by the assistant registrar, controller of examination, vice chancellor of the concerned university to a certain degree. Self-attested xerox of matriculation certificate है. A proof of age, self-attested APSC certificate है, और copy of PRC in case of general candidates. All the supporting documents submitted by the candidates must be self-attested, otherwise the application will be rejected. Self-attested xerox copy of Arunachal Pradesh Medical Council registration certificate. Person with disabilities candidates should submit disability certificate obtained from state medical board है. Such board should comprise a specialist qualified candidates will have to produce the above mentioned certificates and documents and mark sheets in original at the time of interview. Failing which or she will not be allowed to appear in the interview. The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of candidate for admission to written examination of or selection will be final, and no correspondence or personal inquiry will be entertained. Closing date है July 17th. Last date. Examination fee, candidates are required to pay fee 150 rupees. Syllabus of optional subject technical can be downloaded from the above mentioned website appsc.go.in. Friends, if you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching.